Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 8th, subject English. Today's topic is on page number 42. Lesson number 6, Julius Caesar's lecture number 3rd. Decius went on to say, I have heard that the people have decided to give this day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their minds may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dreams? If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid? Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem now, Calpurnia. I am ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Decius to the capital. Caesar did not know that his enemies were all around him at the capital. One after another, they made some excuse to, to come up to speak to him until they all stood beside him. They then Casca drew his sword and drew his weapon deep into Caesar's back. The offers quickly followed. The last of all came Brutus. When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried out in despair, you too, Brutus! Then fell Caesar, and he fell dying on the ground. The killing of Caesar took the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them all. It was Brutus who reassured, reassured the people after taking control of the situation. At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people thus, Romans and countrymen. He began, you now may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. This is my answer, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Would you rather have Caesar living and die as slaves, or Caesar dead and live as free men? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was brave, I honor him. But as he was ambitious, I killed him. There are tears for his love, joy for his fortune, honor for his bravery, and death for his ambition.
I will finish with these words. I killed my best friend for the good of Rome, but I have the same sword for myself when it shall please my country to need my death. This moved the people to admiration and they cheered. Brutus, now Mark Antony rose to speak. Friends, friends, Romanus, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often buried with their bones. So let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people and then went on. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was a terrible fault, and terribly has Caesar answered for it. मीनिंग इन उर्दू लैंग्वेज बच्चों, डिसस ने कहना जारी रखा, मैंने सुना है कि आज लोगों ने सीज़र को ताज पेश करने का फैसला किया है। अगर तुम इन्हें यह पैगाम भेजते हो कि तुम नहीं आ सकते हो तो हो सकता है कि उनका मन बदल जाए। इसके अलावा शायद तुम्हारा मजाक उड़ाएं और कहें, क्या हम तब तक इंतज़ार करें जब तक कि सीज़र की बीवी अच्छे ख्वाब न देख ले। अगर सीज़र खुद को छुपा कर रखेगा तो क्या वो मध्यम आवाज़ में नहीं कहेंगे, देखो सीज़र डर गया। सीज़र अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और बोला, कैल्पर्निया, अब तुम्हारा खौफ कितना अहमकाना लग रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इनके सामने झुक गया। अपना चोगा अपने बदन से लपेटते हुए वो डिसस के साथ कैपिटल के लिए चल पड़ा। सीज़र नहीं जानता था कि इसके दुश्मन कैपिटल पर इसके चारों तरफ मौजूद हैं। एक के बाद एक वो किसी न किसी बहाने उससे बात करने के लिए उसके पास आने लगे, जब तक कि वो सब उसके नज़दीक आकर खड़े न हो गए। तब कास्का ने अपनी तलवार निकाली और इसे गहराई तक सीज़र की पेट में उतारा। दूसरों ने भी उसकी पैरवी की और सबसे आखिर में ब्रुटस आया। जब सीज़र ने देखा कि इसका गहरा दोस्त भी इसके खिलाफ था तो वो नाउमीदी में ज़ोर से चिल्लाया, तुम भी ब्रुटस? तब तो सीज़र को मर ही जाना चाहिए। और सीज़र ज़मीन पर गिर गया और मर गया। सीज़र के कत्ल ने अहले रोम को पूरी तरह हैरान कर दिया और उन सब के अंदर डर और उलझन थी। ब्रूटस ने हालात पर काबू पाने के बाद लोगों को फिर हिम्मत दिलाई। सीज़र की आखिरी रस्म पर ब्रूटस ने डरे हुए लोगों को इस तरह मुखातिब किया, रोम के बाशिंदों और हम वतनों, इसने बोलना शुरू किया, अब आप पूरी वजह से सुनो कि ब्रूटस सीज़र के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ। मेरा जवाब ये है, इसलिए उन्हें
اس لیے نہیں کہ میں سیزر سے کم پیار کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں روم کو زیادہ پیار کرتا تھا۔ کہ آپ یہ چاہتے کہ سیزر زندہ رہے اور آپ غلاموں کی طرح مر جائیں، یا سیزر مر جائے اور آپ آزاد انسانوں کی طرح زندہ رہیں؟ کیونکہ سیزر مجھے پیار کرتا تھا، اس لیے میں اس کے لیے روتا ہوں۔ کیونکہ وہ خوش قسمت تھا، اس لیے میں خوش ہوتا ہوں۔ کیونکہ وہ بہادر تھا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ لالچی تھا، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اس کے پیار کے لیے آنسو ہیں، اس کی قسمت کے لیے خوشی ہے، اس کی بہادری کے لیے عزت ہے، اور اس کی لالچ کے لیے موت۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے گہرے دوست کو روم کی بھلائی کے لیے مار ڈالا، لیکن میرے لیے بھی یہی تلوار ہے۔ جب کبھی بھی میرے ہم وطنوں کو میری موت کی ضرورت پڑے گی۔ اس خطاب نے لوگوں کو خوشی سے بھر دیا اور انہوں نے بروٹس کے لیے تالیاں بجائیں۔ تھینکس۔ السلام علیکم۔